Assalamualaikum. My name is Dr. Sama Ramzan, and the topic for today is the lifestyle modifications of gastroesophageal reflux disease. Before going into the details of lifestyle modifications, first we have to make a little bit sense about why gastroesophageal reflux disease occurs. Some of the time patients have loose esophageal sphincter, especially lower esophageal sphincter, and sometimes they have decreased peristaltic movements that we can say the gastroparesis plays a role in gastroesophageal reflux disease, and sometimes it is the excessive production of the acid leading to the excess acid production and the reflux as well. Then sometimes it is the transient LES relaxation episode that are more than a normal value, यानी कि बहुत ज़्यादा बार और थोड़े थोड़े अरसे के लिए स्फिंक्टर का रिलैक्स हो जाना भी इस डिजीज की वजह बनता है. एंड वी नो दैट द वर्ल्ड फेमस proton pump inhibitors are the first line agents used for the treatment and sometimes for the diagnostic purpose as a PPI test as well. But do not forget the importance of lifestyle modifications, and some of the lifestyle modifications have been proven with studies to play a role. So one by one we will go into the details of the lifestyle modification. So first things first, it is always important to tell the patients that try to put some foam or something on the head and side of the bed. Raising the head side of the bed is going to help the patient to have decreased nighttime symptoms and also the decreased episodes of the reflux, for which के बाज़ का पेशेंट कहते हैं कि रात को हमारी जो है वो reflux यानी जलन की वजह से आँख खुल जाती है. If someone is overweight or you can say obese, then losing some weight is also going to help. इसके बाद if you restrict your alcohol and smoking intake, and the citrus fruits sometimes are the reason for these episodes, and some spicy foods and tomato based products and coffee and tea, these all play a role in exaggeration of the symptoms that are already present. So important चीज़ ये है कि ये जो foods हैं ये supportive role play करती हैं, ऐसे नहीं है कि ये खुद से रिफ्लक्स पैदा कर रही होती हैं. इफ समवन इज एट रिस्क के जैसे किसी का एसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है या किसी को हाइटस हर्निया मौजूद है और उनको ये सिम्टम हो रहे हैं, रिफ्लक्स डिजीज है उन्हें, not just one episode of reflux is being labeled as gastroesophageal reflux disease. It has to be on the criteria of the diagnosis. Avoiding these food items and smoking and alcohol will definitely help you. And the next thing is make some dietary changes. In the above mentioned items are also the part of dietary changes as well. इसके अलावा dietary changes और क्या हो सकती हैं कि for example do not eat too much food, or you can say small portion meals or frequent meals can help you in countering the gastroesophageal reflux disease. And also कहते हैं कि भूख रख के खाना खाना एंड आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना खाना. सो यू कैन से कि आपका जो मुंह का काम है वो मुंह से हो जाए और मैदे का काम मैदे से हो. देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम लाइंग डाउन जस्ट आफ्टर मील्स, स्पेशली इफ़ यू कैन कट डाउन योर नाइट मील, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. और एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग फूड अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा. और ये भी आप कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद फौरी ना लेटें और कुछ थोड़ी सी बात करें. हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ कदम जो हैं वो आप चलें तो उससे भी फिर ये कि बेहतरी आ सकती है. देन अवॉइडिंग बेड टाइम स्नैक्स, लूज क्लॉथ्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट कि समटाइम्स आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे एब्डोमेन पर प्रेशर क्रिएट होता है और एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं. आई हैव एक्सप्लेन के डाइटरी चेंजेस में आप मील साइज़ को रिड्यूस करके और फैट्स को कम और चॉकलेट को कम करके भी सिम्टम्स पर कुछ हद तक ओवरकम कर सकते हैं. कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपके पास नाइट्रेट्स हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को कम करती हैं, जिससे कि आपके रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. इन शॉर्ट,
if you first have to focus on lose some weight, do some exercise, then make changes in your routine of eating habits like frequent meal, भूख रख के खाना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, खाना खाने के बाद फौरी लेटे नहीं, वॉक करें, हो सके तो रात का खाना ना खाएं और लेटे लेटे चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाय, पेप्सी, कोका कोला और स्पाइसी फूड्स, ये सब चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो बेनिफिट्स मिलेंगे विदाउट यूजिंग द ड्रग्स। And if you combine it with drugs, your benefits will be doubled. I think this video is going to help all of you in future and also in the management of your patients, as this disease is so common कि आपके पास हर एक बंदा जो है वो आगे यही कहता है कि खट्टे डकार, सीने में जलन, बदहजमी और मुंह में तेजाब वगैरह महसूस होता है। So thank you very much. Like my channel and subscribe as well.